Hello, my dear students. Today, in this video, I am going to take topic linear programming. Linear programming is a very good chapter, and it is basically used in the computer. But in this mathematics, because it comes into the section C in ISC board, and I am taking the book for reference. This is the mathematics book for class 12 in ISC board. What is linear programming? Linear programming is a tool which is used for optimizing means maximizing or minimizing a linear function for variables called the objective function, subject to a set of linear equations or inequalities called the constraints or restrictions. First, I tell you the meaning of this definition. This is the linear programming is a tool which is used for optimizing. Optimizing means होता है कि हम function को maximize दिखाएं या minimize दिखाएं. You have read in the chapter maxima and minima in the differentiation application of derivative how to show the maxima and minima, that is by using the second derivative test. But here we take the inequalities, the support of the inequalities. With the support of inequalities and equations, we can show the given linear function is optimized, means maxima or minima. कैसे करते हैं उसको? How to do? First of all, we make an equation. एक equation बनेगी, and this equation is like this: ax plus by. In your course, especially the two axes, x-axis and y-axis are given. That is based on only these two axes and in the first quadrant. Because we use the graph for this, so in the first quadrant only we have the questions. इनके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं है कि सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट देयर आर सो मेनी टर्म्स आल्सो. यहाँ पे जो x एंड y है, स्पेशली हमें इन्हीं में इन इक्वेशंस भी बनानी है और इन्हीं में इक्वेशंस भी बनानी है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. जो कंडीशन दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हम इन इक्वेशंस बनाएंगे. और इक्वेशन Where we use the linear programming, ये क्यों करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? Linear programming especially used to in the factory or in the transportation and in the economic problem. There are so wide area and we use everywhere. कैसे यूज करते हैं? जैसे for example, if we want to एस्टेब्लिश मतलब एक फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट को मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. तो सपोज टाइप कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो व्हाट वी वांट, मतलब कि जो फैक्ट्री ओनर होगा उसमें क्या चाहिए? ओनली ही वांट द प्रॉफिट. अब किस तरह से प्रॉफिट चाहिए? मिनिमम लेबर कास्ट हो, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो, मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज हो, मिनिमम रॉ मटेरियल यूज, मतलब जिस तरह से रॉ मटेरियल यूज हो. हमें आउटपुट चाहिए, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए. तो हर एक लोग यही सोचते हैं. ये है तुम्हारा प्रॉफिट करने के लिए. अगर हम कोई भी चीज को मतलब कि मिनिमाइज करें, जनरली जो कॉस्ट जो होती है कि मतलब कि किसी चीज को हमें प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कि हम कोई चीज बेचे तो हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए. लेकिन दूसरे केस में मिनिमम क्या चीज चाहिए? जैसे हमारे एनिमी वो सोल्जर्स होते हैं,
when war होता है from the other country with the other country, then everybody thinks that the कम से कम the least damage हो our side and maximum damage हो that side in the other side. तो ये मिनिमम इसको बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज जैसे कोई और एग्जाम्पल ले, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में या डाइट में, डाइट चार्जेस होते हैं, हमको कम से कम डाइट में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस और मिनरल्स पा जाए, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस और मिनरल्स पा जाए. द एट द मिनिमम डाइट, बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, ये बैलेंस डाइट बोला जाता है. और बैलेंस डाइट को मैक्सिमम नहीं किया जा सकता, ओनली इट इज मिनिमम, कि कम से कम डाइट में हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस और मिनरल्स पाए. सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एक डिपो है और एक डिपो से कई जगह जो ट्रक होते हैं, सामान उतरते हैं, बैगेज, तो दैट बैगेज ड्रॉप टू द स्टेशन ए बी सी डी, कई प्लेसेस पे एट द डिफरेंट प्लेसेस, देन द एट द, तो ऐसे रूट बनाए जाते हैं कि जिसमें कि वो अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को कम कर सके एंड ये जो जितने भी पैकेट्स होंगे वो सब उतार सके डेफिनेट टाइम पे और एप्रोप्रिएट प्लेस पे. तो एट द मिनिमम कास्ट, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, तो कम से कम खर्च में हम ज्यादा से ज्यादा सामान दे सके. लेकिन प्रॉफिट की जहां तक बात आती है कि हम कम से कम रॉ मटेरियल, लेबर चार्ज, ये सब चीजें यूज करके हम कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट. तो दैट जेड वी हैव टू शो द ऑप्टिमाइज्ड, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम. एंड एक्स एंड वाई आर द variables which we use to take like the x units of the a product, y units of the b product, या जो भी चीज बन रही है या जो भी चीज हम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसके लिए जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकाला. a and b are the constants, just like the 2 3 4 5 6 like that. And these x and y are always non negative. क्यों? क्योंकि ये जो भी माने जाएंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे. नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि वी कैन नॉट गेट द नेगेटिव थिंग्स. द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव ही होगा. द सिमिलरली द रुपीस ऑलवेज पॉजिटिव, कास्ट किसी की ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगी. तो दीस टू यू विल गेट ऑलवेज इन दिस चैप्टर इन एवरी क्वेश्चन, सब जगह मिलेगा. देन कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस जो यूज होते हैं, इनइक्वेशन वर्ड ना यूज करके हम कांस्टेंट यूज करते हैं. जैसे कोई भी अगर हमारे पास में बने इनइक्वेशन cx plus dy is less than or greater than, जो भी बन रही है ऐसे for the there are the four symbols for the inequation, greater than or equal to, less than or equal to, greater than or equal to. तो इससे जो इनइक्वेशंस बनेंगी, these are known as the constraint. Then one thing is there कि ये जो इनइक्वेशंस बनती हैं और जो इक्वेशन बनती है, कोई भी ये तो नहीं आगे कोई इक्वेशन बन जाए, तो in that case you have to draw the graph, and in the graph there should be the feasible reason. feasible reason का मतलब होता है कि जो जिस रीजन में हमको निकालना है मैक्सिमा या मिनिमम. जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर द टू, सपोज द x c1x plus d2y समथिंग इज लेस देन और ग्रेटर देन 0 या 2 3, जो भी हो जाएगा, जो इनइक्वेशन मिल जाए उससे हमें ग्राफ मिल रहा है. मान लो इस तरह से कोई ग्राफ है, एंड द फिजिबल रीजन इज दिस. फिजिबल रीजन मींस द कॉमन पार्ट. ये कॉमन पार्ट में यू कैन सी देयर आर द 4 पॉइंट्स, 4 कॉर्नर्स, एंड दीस कॉर्नर्स नोन एज द वर्टिसेस आल्सो. तो जो ग्राफ से जब हमें वर्टिसेस मिलेंगे, इन दैट वर्ड दीस वर्टिसेस डिसाइड द मिनिमम एंड मैक्सिमम. मतलब ये कि ये ओरिजिन है, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट सी यू हैव टू फाइंड एंड यू विल पुट हियर. अब जैसे मैक्सिमम शो करना है तो ये 4 पॉइंट्स हम पुट करेंगे, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू देगी इस इक्वेशन में उसे कहेंगे कि दिस इज द मैक्सिमाइज.
अदरवाइज जो मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम देखना है हमें। तो दिस इज, तो इन दिस केस इसे कार्नर पॉइंट्स भी बोलते हैं, इन वर्टिसेस को कार्नर पॉइंट्स भी बोलते हैं। नाउ हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फिजिबल रीजन। पहले तो एक बाउंडेड होता है, ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है, बाउंडेड, और एक होता है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। इन सम केसेस लाइक दिस, और यू विल गेट द फिगर लाइक दिस, इस तरह से शेड पार्ट मिलेगा। एंड हियर यू विल गेट द हाउ मेनी कार्नर पॉइंट्स, 1 2 एंड 3, these corner points जो भी उससे फिजिबल रीजन में आ रहे हैं, तो दैट, बट दिस फिजिबल रीजन, दिस इज कॉल्ड बाउंडेड फिजिबल रीजन एंड दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। बाउंडेड फिजिबल रीजन में तो जो मिनिमम मैक्सिमम होगा बिल्कुल कंफर्म होगा, बट इन दिस फिजिबल रीजन इफ ax plus by is less than c, suppose, in that case you will get the minimum point, you will get the minimum point। लेकिन अगर ax plus by plus is greater than c, तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फिजिबल रीजन में आ रहा है कि नहीं, यानी कि दिस लाइन कम्स इन द फिजिबल रीजन और दिस लाइन कम्स इन द फिजिबल रीजन। तो वो डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वन क्वेश्चन इज देयर, a company manufactures two types of toys, A and B. A toy of type A requires 5 minutes for cutting and 10 minutes for assembly. Company manufactures two types of toys, two types of toys, A and B. A toy type A toy require 5 minutes for cutting and 10 minutes for assembly। एक टॉय का उसको हम ग्राफ पे बना दे रहे हैं इससे टेबल से, तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉयज, और कटिंग उन टॉयज का बनाने का क्या तरीका है, कटिंग एंड असेंबली। तो फर्स्ट टॉय में कटिंग 5 मिनट्स होती है और 10 मिनट्स असेंबली में होती है। 5 मिनट कटिंग एंड 10 मिनट्स असेंबली। द सेकेंड टाइप ऑफ टॉय रिक्वायर्स 8 मिनट्स कटिंग एंड 8 मिनट्स असेंबली। देयर आर 3 आवर्स अवेलेबल फॉर कटिंग, कटिंग के लिए 3 आवर्स है। तो मैक्सिमम हमारे पास कटिंग के लिए फॉर ए एंड बी जो भी है 3 आवर्स, एंड फॉर असेंबलिंग वी हैव द 4 आवर्स। Our profit is ₹50 each on a toy A and ₹60 on each of a toy B. A toy पर ₹50 है और B टॉय पे ₹60 है। तो इसका लगा कि एक टॉय पे तो हमको क्या लेट करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई। लेट एक्स टॉयज फॉर टाइप ए एंड वाई टॉयज फॉर टाइप बी। ₹50 एक टॉय पे प्रॉफिट होता है, तो व्हाट प्रॉफिट विल बी फॉर एक्स टॉयज, देयर इज द ₹50x एंड ₹60 फॉर टॉय बी, तो 60y। दिस इज यू हैव टू शो दिस इक्वेशन ऑप्टिमाइज, मतलब मैक्सिमाइज शो करना है। सबसे पहले ये इक्वेशन जब बन जाती है तो अब
but also you have the two more inequations. Always in every question, that is a constant, you can say the always greater than or equal to 0. Why? Because number of twice cannot be negative. So these two more inequations, and you see here this table 5 minutes twice A के लिए कटिंग में 8 minutes twice B के लिए, तो कटिंग का पूरा टाइम 3 hours है. इट मींस द फॉर कटिंग द टॉय A दोनों मिला कर ये एक टॉय के लिए है, ये सब एक एक टॉय के लिए, वन टॉय सिंगल टॉय. इफ वी हैव द x टॉयस तो 5x मिनट्स लगेंगे और 8y मिनट्स लगेंगे. मींस फॉर कटिंग time of toy A and B, it will be 5x plus 8y cannot be more than 3 hours. 3 hours से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें तो it will be not less than not greater than 3 hours means 180 minutes. So this is the equation number 4. Similarly for assembling both the toys, so for assembling in place of cutting, write the assembling, the time of toy A and toy B will be 10 minutes means 10x plus 8y, not more than less than or equal to. So less than or equal to is this 4 hours means 240 minutes. Equation number 5. These 5 equations, पहली इक्वेशन को ही तुम्हें दिखाना है, but these 1, 2, 3, 4 equations you have to draw the graph and then see the corner points. अब corner points ये इक्वेशन बन गई, इसको हम बता देते हैं. And how to draw the graph of these? Mainly in these two equations. तो इसके लिए एक हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं. तो plotting the points on the graph, this is the type of straight line, these two. तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? That is 20, 8 to the 16 and 8 to the 16, 8 5s are 22.5. And if y is equal to 0, then x is equal to 5, 3 is 15, 6. Similarly for the second inequation, x and y, x is equal to 0, so y is equal to 30 and y is equal to 0, so x is equal to 24. Now you draw the graph. अब चूंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है तो हम इसको ऐसे ले ले रहे हैं. And this is x axis, this is y axis. To plot this line 0, 22.5, तो पहले तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लें. 10 का लें, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40. And 0, 22.5, it will lie on this point on the y axis. This is 22.5. 36,0 means 30 and this one. Draw the line like this. One line. Second line 0, 30. 0, 30 it will be here. And 24,0 means it will be here. And join this one. And now which part will be the visible? मतलब common reason क्या होगा? अच्छा साथ में x is greater than 0, y is greater than 0, it means everywhere the shaded part will be in the first quadrant, क्योंकि y की वैल्यू भी greater than 0, x की वैल्यू भी greater than 0. अब इसको कैसे करेंगे? If it is less than 0, better option means ये तो एक लाइन है ना, हमें तो number of lines infinite lines there are because it is less than, तो कई सारी लाइंस हो सकती हैं, but where you will draw above the line, इस साइड लाइन की इस साइड लाइन. तो for this you put 0 and 0 in place of x and y, and if you see the 0 is less than the number, given number, and this statement is correct.
it means all the lines will draw towards the origin, मतलब इधर होंगी। तो दोनों केस में 0 इज लेस देन है, जो कि सही है। तो towards the origin means you will get only the common part is here, क्योंकि दोनों इसमें सेटिस्फाई करेंगे। ये लाइन भी सेटिस्फाई कर रही और ये लाइन भी सेटिस्फाई कर रही, क्योंकि ये अगर लेंगे तो फिर ये नहीं सेटिस्फाई करेगी, अगर ये लेंगे तो फिर ये नहीं सेटिस्फाई करेगी। तो इसलिए हमें कॉमन पार्ट लेना है। एंड देयर आर द 4 कॉर्नर्स, एक O, A, B and C. O you know, A you know, what is A? 24, 0. What is C? C is first one, 0, 22.5. And what is B? How to find the coordinates of the B? Solve simultaneously these two equations. इनको simultaneously बस ऐसे solve कर ले। तो 8y is equal to 180 and 10x plus 8y is equal to 240. So you will get minus 0 minus 5x minus 60 or x is equal to 12. After getting x की value 12 है तो किसी में भी रख दे, तो you will get 60 plus 8y is equal to 180. So y is equal to 120 by 8. 8 means 15. So 12 comma 15. This is the coordinates of point B. After getting the coordinate of point B, you have to find the maximum or minimum value जो पूछा जा रहा है, because it is asking in the question how many toys of each type should the company manufacture in a day to maximize the profit. तो पहले मैक्सिमाइज कर ले, उसके बाद जो x और y की वैल्यू है उस पे पता चल जाएगा। तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारा कितना था z। For this one more corner point you write here, corner point are versus कौन से कॉर्नर पॉइंट है 0, 0, then 24, 0, then 12, 15 and then 0, 22.5 and 1 by 1 you will put in 50x plus 60y जो पहली इक्वेशन थी, इसमें 1 by 1 put करें to get the optimized solution। और ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है z is equal to 50x plus 60y. So what you will get at 0, 0, 0, 24, 0, 100, 1200 and this 12, 15, 1500 and 22.5 to 16 to 13, 1350 and this is the maximum 1500. So at 12, 15 you are getting the maximum profit. Therefore the number of toys for A means type A toys will be 12 and number of toys B will be 15. So by this way you can get your answer. So in this exercise the same type of questions you will get. Thank you.